This program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Good Veda. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल एंटरप्राइज सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये स्पेशल फीचर हर रविवार सायंकाल 6 बजे हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते हैं और इस प्रोग्राम में हम गीता उपनिषद के जरिए, गीता उपनिषद के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को, सनातनी ज्ञान परंपरा को समझने समझाने का काम करते हैं। और इस महती यज्ञ में आहुति देने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी हैं बारडोली गुजरात से हर ग्रेस स्वामिनी सदविद्यानंद सरस्वती, जो कि अद्वैत फिलोसॉफी की और वेदांतिक फिलोसॉफी की जबरदस्त विद्वान हैं और प्रवचन करता है। साथ ही हमारे साथ होंगे मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर रहे हुए और साथ ही ख्यातनाम स्तंभकार एमिनेंट कॉलमनिस्ट श्रीमान विठल जी नाडकर्नी हमें मुंबई से ज्वाइन करेंगे। और हमारे साथ होंगे मॉडर्न मैनेजमेंट के प्रोफेसर श्रीमान श्रीराम जी दर्बा, जो कि बेंगलुरु से हमें ज्वाइन करेंगे। और साथ ही भारतीय मूल के इन दिनों अमेरिका निवासी प्रख्यात प्राध्यापक एमिनेंट प्रोफेसर श्रीमान अनिल जी भाटे हमें यूएसए से ज्वाइन कर रहे हैं, यूएसए के फ्लोरिडा से। और साथ ही आज गेस्ट स्पीकर के तौर पर हमारे साथ एक स्पेशल एंट्री है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से चिन्मया मिशन के जबरदस्त संत हैं, डायनामिक संत हैं भारत के। और यदि परिचय की बात हो तो हिज ग्रेस स्वामी मित्रानंद जी हमारे साथ होंगे, गेस्ट एंट्री है। और आज का यदि हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 13 में हम एंटर हो चुके हैं। और आज हम श्लोक नहीं टेकअप कर रहे हैं, केवल ये जो अध्याय है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, परिचयात्मक जो भावभूमि है वो आपके समक्ष रखेंगे। क्षेत्रज्ञ विभाग योग विषयक ये जो अध्याय 13वां है, चैप्टर 13 जो है, इसकी आज से शुरुआत हो रही है। और आपके समक्ष जो आज इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। इस अध्याय के कुल 34 श्लोक हैं, 34 श्लोकाज आर इन दिस चैप्टर। तो अगले एपिसोड से हम श्लोक वाइज विवेचन कराएंगे हमारे विद्वान पैनलिस्ट से। और यदि हम बात करें इस अध्याय की विशेषता की, तो एक ओवरऑल सारांश जो है, एक जिस्ट जो है, वो इसके रूप में ये एपिसोड आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं। और इंट्रोडक्टरी पार्ट इसलिए हम एक अलग एपिसोड के जरिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये अध्याय बहुत ज़बरदस्त है। वैसे तो गीता उपनिषद अपने आप ही ज़बरदस्त है, हर अध्याय हर चैप्टर ही विलक्षण है, लेकिन इस अध्याय की कुछ और विशेषता भी है। और इसके लिए यूँ तो हमारे सम्मानित और विद्वान पैनलिस्ट आपको पूरी विवेचना से अवगत कराएंगे और कराने वाले ही हैं, लेकिन एक संक्षिप्त भावभूमि के रूप में इस अध्याय के बारे में यदि हम बात करें तो ये अध्याय भारतीय सनातनी परंपरा को, भारतीय सनातनी हिंदू ज्ञान परंपरा को दुनिया की अन्य विचार और धार्मिक परंपराओं से एकदम डिस्टिंग्विश, अलहदा या यूं कहें एक्सक्लूसिव कर देता है, एकदम अलग खड़ा कर देता है। और इस वक्त जहां पूरी दुनिया में चर्चा है विचार परंपराओं की और उन विचार परंपराओं को मानने वालों की, जो स्त्रियों को, अबलाओं को, युद्धबंदियों को निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं, बालकों के सिर तन से जुदा कर रहे हैं, ऐसी परंपराओं के पैरेलल ये जो ज्ञान परंपरा जो हम बात कर रहे हैं, एक तरफ बैटलफील्ड है जिसमें इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटीज हुई हैं
पूरी दुनिया दहली है, और दूसरी तरफ ये विचार परंपरा है जिसमें युद्ध के मैदान में खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण अपने अर्जुन सखा को, अपने शिष्य को उच्चतम ज्ञान की, विलक्षण ज्ञान की उस परंपरा के बारे में बता रहे हैं, और वो भी युद्ध के मैदान में ज्ञान का सूक्ष्म निरूपण हो रहा है। यह है डिस्टिंग्विश्ड डिफरेंस, ये इस अध्याय की विशेषता है। तो क्षेत्रज्ञ विभाग योग का ये जो अध्याय है, ये जो आज से हम शुरू कर रहे हैं, तो इस विलक्षण नीर क्षीर ज्ञान की परंपरा को ये जो अध्याय है, ये दर्शन विज्ञान को एकदम उत्तुंग स्थान पर प्रतिष्ठापित करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के यदि हम इसको पूरे वाङ्मय को देखें तो ये जो आज का अध्याय है, ये एकदम ऊंचाई पर ले जाता है। और कैसे ये ज्ञान विज्ञान परंपरा उत्कर्ष पर स्थापित है, ये समझने के लिए अब हम चलते हैं हमारे सम्मानित पैनलिस्ट के पास। नाउ विदाउट फर्दर ड्यू वी वुड लाइक टू वेलकम आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर ग्रेस स्वामिनी सद्विद्यानंद जी सरस्वती, श्रीमान विठल जी नाडकर्नी, प्रोफेसर श्रीमान श्रीराम जी दर्भा, और गेस्ट स्पीकर के तौर पर हमारे साथ हैं हिज ग्रेस स्वामी मित्रानंद जी। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज रिसाइटल के लिए श्लोक हम टेकअप नहीं कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन है, इसलिए सीधे हम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और चलना चाहेंगे स्वामिनी जी के पास में। स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्ते टू एवरीवन, हरिओम। हरिओम। आज बहुत सुंदर अध्याय है ये तो, और हम अगर भगवत गीता, पूर्ण भगवत गीता हम देखें तो गीता के 3 विभाग करे जाते हैं, 1 से 6, 7 से 12 और 13 से 18। और अगर हम हमारे वेदांत का सिद्धांत देखें तो वेदांत का सिद्धांत है तत्त्वमसि। ब्रह्म ज्ञान वो वेदांत नहीं है, जीव ब्रह्म का ऐक्य का जो ज्ञान है उसे वेदांत कहते हैं। लोग ब्रह्म ज्ञान को ही वेदांत बोल देते हैं, ब्रह्म ज्ञान वेदांत नहीं है, जीव ब्रह्म का ऐक्य का ज्ञान जो है। और इसीलिए यहाँ पर भी हम वो छांदोग्य उपनिषद जिसको कहते हैं तत्त्वमसि, तत् जगत कारण ब्रह्म त्वम असि, छांदोग्य उपनिषद में मुनि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को जो उपदेश दिया था, तत्त्वमसि वाक्य, महावाक्य जो है, तो वही महावाक्य हम यहाँ भी देख सकते हैं। तत् मानी ईश्वर, जगत कारण ईश्वर है, त्वम मानी की जीव है जो अपने को अल्प मान के जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है, और असि मानी की ऐक्य, एक ही है। तो तत् जगत कारणम त्वम असि, ये जो है वो हम भगवत गीता में देख सकते हैं। तो 1 से 6 अध्याय में जीव का अपना स्वरूप भगवान ने प्रकट किया, आत्म तत्व क्या है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान ने पूर्ण रूप से ये आत्म तत्व का स्वरूप का निरूपण किया, स्पष्ट रूप से। न जायते म्रियते वा कदाचित, कदाचित मानी कभी भी नहीं, कोई उत्तर जन्म भी नहीं है, कोई पूर्व जन्म भी नहीं है। आप समझो, कदाचित माने ऐसा नहीं कि अब आपका जन्म नहीं होगा, पहले आपका जन्म हुआ था अब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अभी भी आप नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव के नित्य आत्मा है। तो ये आत्मा का निरूपण करके अर्जुन को और अर्जुन के साथ हम सबको भगवान ने उपदेश किया है कि जीव का स्वरूप जो है वो नित्य सच्चिदानंद स्वरूप है। 7वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न नहीं कर रहा है, लेकिन 7वें अध्याय से भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपना स्वरूप अर्जुन आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, किसी प्रकार से संशय रहित होकर जैसे आपको ज्ञान, मेरा ज्ञान होगा उस प्रकार से मैं आपको उपदेश करूंगा। और ये ज्ञान जो मेरा, देखो ये विज्ञान की जो बात हम लोग करते हैं, तो ये जो वाक्य भगवान का जो है, किसी भी वैज्ञानिक को हम चैलेंज कर सकते हैं। ये भगवान का जो वाक्य जो है, यज्ञात्वा भूयः ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, मानी कि एक बार भगवान के स्वरूप को आपने जान लिया, आपके लिए अन्य कुछ जानने योग्य नहीं रहेगा। आप देखिए, क्योंकि ये जगत जो है, जगत में आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। क्योंकि ये जगत जो है वो संहत है, संहत माने कि असेंबल्ड है, अनेक अंग उपांग की विशेष प्रकार की जो रचना है। अगर हिंदी में हम उसको, अंग्रेजी में कहते हैं कि
इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। इसको देखो, ये संस्कृत भाषा की विशेषता है कि एक शब्द है, लेकिन वो शब्द को समझाने के लिए हमें एक बड़ा सा वाक्य लिखना पड़ता है, संघात जिसको हम कहते हैं। तो संघात को कैसे अंग्रेजी में कहेंगे? इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। अगर हिंदी में कहना है तो सप्रयोजन बुद्धिपूर्वक की रचना। ये संपूर्ण जगत जो है एक बुद्धिपूर्वक की रचना है, अनंत ज्ञान है। अब पुष्प देखिए तो पुष्प में भी अनंत ज्ञान है, भले पुष्प अल्प है लेकिन जो ज्ञान पुष्प में है वो अनंत है। और इसीलिए ये जगत का ज्ञान हम जितना भी प्राप्त करें वो अपूर्ण ही रहता है। इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे कि व्हाट इज द ह्यूमन नॉलेज? ह्यूमन नॉलेज इज अप टू वन मोर क्वेश्चन। क्यों कोई भी वैज्ञानिक है, आप उनको 5 प्रश्न पूछे, 6ठे 7वें प्रश्न पर तो उनको उत्तर देना पड़ेगा मुझे मालूम नहीं है। आप समझो, तो ये जगत का जो ज्ञान जो है वो अनंत ज्ञान है, लेकिन हम वो नहीं जान सकते हैं। तो भगवान जब ये स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे जानने के बाद अन्य कुछ जानने का बाकी नहीं रहेगा, तो ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया। यही बात तत्व छांदोग्य उपनिषद में यज्ञात्वा, अब देखो यहाँ यज्ञात्वा करके कहा है, तो छांदोग्य उपनिषद में भी कहा है कि एकस्मिन् विज्ञाने सर्वं विज्ञातम भवति। एक के ज्ञान से ही सर्व का ज्ञान हो जाता है। मुंडक उपनिषद में भी प्रश्न क्या है शौनक ऋषि ने, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। ऐसा कुछ है जो एक का ज्ञान प्राप्त करने से ही मुझे सब ज्ञान हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो भगवान ने 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक अपना स्वरूप प्रकट करके दर्शाया कि मैं ये हूं। अष्टधा प्रकृति जो है भगवान की, अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है। तो प्रकृति की चर्चा भगवान ने की। भगवान ने स्वयं कहा कि ये प्रकृति जो है मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति जो है ये संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है। तो ये भगवान का जो स्वरूप, जो तत्पद जिसको हम कहते हैं, तत्पद का निरूपण भगवान ने ये 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में किया। अब ये 2 हो गए, एक जीव है दूसरा ब्रह्म है। तो क्या ये 2 है क्या? तो 2 नहीं है, 2 एक ही है। उपाधि की दृष्टि से 2 है, तत्व की दृष्टि से देखते हैं, स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा भी सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ब्रह्म ईश्वर जिसको हम कहते हैं, ब्रह्म हम जिसको कहते हैं, वो भी सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो वो ऐक्य का जो ज्ञान जो है, वो ऐक्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए ये 13वां अध्याय है। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि अर्जुन का प्रश्न है, लेकिन मुख्य ग्रंथ में अर्जुन का प्रश्न नहीं है, सीधा भगवान श्री भगवान उवाच से ही यहाँ आरंभ होता है। और भगवान बहुत सुंदर रूप से हमें यहाँ दर्शाते हैं। और इसीलिए शंकराचार्य जी भी यहाँ पर ये संगति भाष्य में लिखते हैं कि 7वें में जो भगवान ने परा प्रकृति, जो ईश्वर स्वरूप जो है, क्षेत्रज्ञ स्वरूप जो है, जो ईश्वर है, और जो अपरा प्रकृति जो है, वो दोनों का निरूपण किया है। तो वो जो 2 प्रकार की जो ईश्वर की प्रकृति है, जिसके कारण ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। उतना ही नहीं, जो जीव जो है, जो जीव के कारण जीव अपने को कर्ता भोक्ता मान के चल रहा है, जन्म मृत्यु के अधीन जो है। आगे भगवान ने कहा अवश्य मानी 8वें अध्याय में कहा अवश्य मानी कि अपना कोई नियंत्रण नहीं है, एक देह से दूसरे देह में उनकी गति होती रहती है। और ये जो जीव है, जब तक उनको ये अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, जब ईश्वर से ऐक्य का ज्ञान नहीं होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। और दूसरा 12वें अध्याय में भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां। तो ये 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भगवान ने तत्ज्ञानी भक्त के लक्षण जो भगवान ने दर्शाए हैं। तो वो जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, जिसके कारण वो ज्ञानी कहलाते हैं। कपड़े पहनने से या तिलक लगाने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। ज्ञानी तो जो है, जो गृही किसको कहेंगे, जिसके पास घर है उसे गृही कहेंगे, जिसके पास धन है उसे हम धनी कहेंगे। तो ज्ञानी मानी क्या है? उपाधि से कोई ज्ञानी नहीं है, ज्ञान जिसके पास। और इसलिए शंकराचार्य कह रहा तत्व ज्ञान है न के न पुनः तत्व ज्ञान है न, किस तत्व ज्ञान के कारण उनको ये ऐक्य का ज्ञान होता है और वो भगवान को प्रिय है। 7वें अध्याय में जो भगवान ने कहा है कि
ये भक्त मुझे, ज्ञानी तो आत्मवे मत उदारा ही ते सर्वे, ये सब सर्व 4 प्रकार के जो भक्त सब मुझे प्रिय है, सब उत्कृष्ट है, लेकिन ज्ञानी मुझे प्रियो ही अत्यंत है, ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो तत्व ज्ञानी की ये क्या महत्ता है जिसके कारण वो भगवान को अत्यंत प्रिय है? तो वो तत्व ज्ञान के दर्शाने के लिए भगवान यहाँ ये 13वें अध्याय का आरंभ करते हैं। तो 13वें अध्याय के द्वारा ही हम ये ब्रह्म वेदांत का जो तत्व ज्ञान है, जो ऐक्य ज्ञान है, वो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है। जैसे हम देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, देखते रहेंगे, दूसरे सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। नमस्ते। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हम चलते हैं नाडकर्णी साहब के पास में। नाडकर्णी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। स्वागत, नमस्कार, नमस्कार। As usual, Swamini ji has explained it so beautifully that, like Darbha Sahab said last time, I just wanted to go on listening and I almost forgot that I am supposed to participate. But taking a cue from her beautiful lead of Tattvamasi, actually I was going to bring a little bit of a science-oriented perspective in this, where we are only not talking about the person, but also the background. So this is what could be called an ecological verse also. In the sense, it talks about the kshetrajna and also it talks about the kshetra or the field. But as the Mahavakya says, that in essence, they are both the one, they are one. So it is this Advaita Vedanta that is shining in this Mahavakya that Shvetaketu and Uddalaka, his father, are discussing in the great Chandogya Upanishad. Now, to bring this to an intensely personal anecdote of mine, when my daughter Ambika was born and Dr. Dagli brought her to me at the hospital for the first look at her, something inspired me to go to that tiny ear of hers and whisper very gently, Tattvamasi. This is real. This is something that I did spontaneously to say that you are that divine, because I was filled with wonder of divinity that was being presented to me. How did this come forth? How is it possible that these eyes are? And there is a little smile. Now, my doctor sister-in-law says, वो involuntary है, वो आपसे हंस नहीं रही है, वो involuntary spasm होगा. But I am saying, how does it come? And this is another beauty of our tradition that Swamiji speaks about. You see our Upanishads, whether it is a Keno Upanishad, whether it is Mundaka, they are full of beautiful questions. Kena itself, kahan se? Kya hai ye? So, according to some of our Purvacharyas, the 18 chapters of the Bhagavad Gita can be broadly divided into 3 sections. We've seen that already. The first covers the 6 chapters describing the Karma Yoga or the path of duty. The second putative section from chapter 7 to 12 focuses on the path of bhakti or devotion to the Lord. This also describes the glory of God as the nectar that nourishes devotion. Then the third section, starting from this 13th chapter that we are going to discuss in our today's introduction and the sections that will follow. This expounds upon Tattva Jnana or the path of knowledge in scriptural terms and principles. Now, the terms Kshetra and Kshetrajna, with which chapter 13 began, also is to be found with a beautiful coincidence at the very beginning of the Bhagavad Gita. See, Dharma Kshetre, Kurukshetre, Samaveta Yuyutsava, Mamaka Pandavaschaiva, Kim Kurvat. Now, Kim Kurvat Sanjaya. क्या किया उन्होंने, मेरे बच्चों ने और पांडवों ने धर्म क्षेत्र पर, कुरुक्षेत्र पर जूझने के प्रयास से वो इकट्ठे हुए सेनानियों ने क्या किया? So the Bhagavad Gita also begins with a question.
And the beauty, as Sharmaji spoke, this is not a battlefield of barbarata. This is not a battlefield where, innocent babes are being put at the end of a, Sangin. No, this is actually the holy battlefield called Kurukshetra. And the Bhagavad Gita, by many of our acharyas, has been regarded as a metaphoric as well as a literal symbol of what is considered to be the field, the context or the background against which the drama of life and death, with all its infinite variations in between, play out. And this chapter does indeed open with a query from that incomparable archer, Arjuna. Prakriti and Purusha, the field and the knower of the field, the knowledge and that which ought to be known. I wish to know about these, O Lord, he asked Sri Krishna. And the rest of the chapter 13th of the Gita is all about the field and the knower, and to cast this discourse in terms more accessible to modernist sensibilities, may I present what is known as the topological or the vector physiological psychological point of view. In these disciplines, there is also a kshetra or a field theory, which is meant to examine patterns of interactions between the individual and the total field or the environment. The concept made its appearance with its roots in holistic perspectives of Gestalt theories. It was developed by a psychologist called Kurt Lewin in the 1940s. And there is also an equation that is given. But to come back to our discourse in the 13th chapter, the Lord, I submit humbly, talks about eminence, interaction, and the individual. We can call these the three components or the three eyes that you often stumble upon in materialistic or psychological sciences. But what this holistic perspective does ultimately, despite analyzing interactions between energy and matter and all that, it says that all this is pervaded by the divine element. And this is essentially the special Eastern Oriental point of view. But again, there is a caveat. To discern this ineffable infusion of the infinite into the mundane or the finite or the Nashvara Dhatus, one does indeed need a special sense or awareness, not to forget divine grace or anugraha. As said in the 30th verse, nature alone acts, not the illusory or the individualistic, egoistic element. And he who perceives this deep truth is able to perceive what the Lord in this beautiful chapter calls the actionless Atman. This is akin to what psychology might term as sublimation, where the sense of self goes beyond bondages or anxieties caused by action. Prakruteva cha karmani kriyamanani sarvasya yap pashyatita atmanam akartarasa pashyati. This also leads to a balanced or a distributed perspective as indicated in the 29th and the 30th verses of the chapter. Thus he sees the miracle of the higher or inner light of illumination of all existence. This is also invoked in the first verse of the Mundokopanishad of the two birds sitting on a single branch, one active and the other passively active. The two birds, beautiful of wing, close companions, cling to one common tree. Of the two, one eats the sweet fruit of the tree, and the other eats not, but watches the fellow. In this matter of creation, the material energy that is responsible for cause and effect is in fact also responsible for our happiness and distress and the sense of separation that we have. Also, the Chandogya Upanishad also invokes this beautiful parable of the little fruit
of the great banyan tree, where the master says, bring that fruit, split it. What do you see? What else do you see after you split the seeds? And it is this parable that, if I may quote my personal epiphany, led me to the concept of the speaking tree, which we planted in the times of India. It is this tree of knowledge, Urdhva Mula, the Shakha, Ashwastha Prahuravayam, under the branches of whom we sit at the feet of a great Dakshinamurti like the Lord, and we ask him, how does this happen? What do we do? Who is the enlightened one? Do we take the path of action or do we take the path of renunciation? How do we reach you, O Lord? And the beauty of this for the Kali Yuga is that the Lord outlines apparently or seemingly simple ways of reaching him through bhakti, of which I shall hold my comments for the next round. Thank you. Right. एक बात है, तो अब हम चलते हैं प्रोफेसर श्रीमान श्रीराम जी दरभा के पास। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, हरिओम। साथ ही हमारे साथ आज थोड़ा से लेट जुड़े हैं प्रोफेसर श्रीमान अनिल जी भाटे जुड़ गए हैं, तो नेक्स्ट में यस जी स्वागत है आपका भी। लेकिन अभी दरभा साहब का टर्न आ गया है, आप थोड़े से लेट हुए, बट एनीवे दैट डजंट मैटर। यस, ठीक है। We are entering into a different field from today. It is a very subtle and a profound field of knowledge. Like the earlier speakers so nicely explained, both the Oriental and Occidental views. It makes the next speaker a little easier to deliberate upon and then come up with something totally different. In fact, Vithalji has taken the thunder out of my what I wanted to say. But anyway, I'll reinforce. I'll again say that, but in a logical manner, you know. So who am I? So everybody thinks about everybody, but they seem to have not got any answer so far. So this field is, but the body is a field of energy, whether ये electrical energy है, magnetic energy है, electromagnetic है, कुछ और है, but definitely it is a storehouse of the energy and it's like a power grid that we have been blessed with, and this is a great opportunity which the human being, to be born as a human being is a divine boon and a great opportunity. A great opportunity for what? I think we need to examine which majority and most of the time, if not all of them, human beings who seem to be not focusing at all, especially in a materialistic pursuit and the hedonistic pursuit of the world. And what with the diversity, the reinforcement on the diversity, the celebration of diversity are being talked about these days, then the Sanatana talks about unity, that is yoga, and the motto, the line, the tagline of India is also the unity in diversity. Bhinnatva mein ekatva dhunna. This is at a sociological level is one thing, and a spiritual level, especially when we are talking about Bhagavad Gita, which is a Yoga Shastra, and then Upanishad Sara, Brahma Vidya, the connotation becomes extremely important. While it is a philosophical treatise, as I keep saying, it is also the most practical manual ever made available to humans for their enlightened living out here and realization and mukti or liberation or bliss. Having said that, it is a field of energy with a tremendous potentiality built in. Like Adi Shankara says, Jantunam Narajanma Durlabham, that's what he says in Viveka Chudamani. So while several things like Ahara, Nidra, Bhaya, Maiduna are same to all the living beings, what makes the human body different from every other body or everybody else is the spirit which is there and the intellect. The manas also is there for animals. Buddhi is also there in a latent manner in animals also. But
the discrimination power, the Vivechana Jnana, Vivechana Shakti. That is why he is named the jewel, the crushed jewel of discrimination, Viveka Chudamani. Viveka has got a fantastic connotation in our this thing. Having said that, Jentunam Narajanam Durlabham, then that's what he said. So it is a rare opportunity which is a result of several pious deeds over different janmas, because we believe in reincarnation and then Punarjanma theory. That is the essential aspect of the Sanatan Dharma or Hinduism, as we call it. So then he started, without getting into the actual slokas, the chapter deals with Kshetra and then Kshetrajna. So then the Kshetra is the field and Kshetrajna is the knower of the field. Who is the knower of the field he is talking about? One is, of course, let us focus on we human beings at a mundane level, at a temporal field level, as knower of the this field. The second one is who is the actual Antaratma, who is the Paramatma, the knower of the all fields. In a logical manner, let us try and then understand. And okay, we agree that it is a great, rare opportunity to be born as a human being. Then what is the purpose? Is it only khao piyo maja karo ke liye? Because that is there for every living being. Then what is the chief purpose in our dharma? The dharma shastras have very clearly given us purusharthas, dharma, artha, kama, moksha, and moksha is the parama purushartha, the chief purpose or the aim of the human life. So by living a righteous living and enlightened living, by knowing who am I, what is my body, what is this body for? But in normal parlance, we use that Sharira Adyam Kalu Dharma Sadhanam, because this body isn't it an instrument or a tool to achieve a chief purpose, which is dharma, the righteousness. So are we using it for dharma? So for that we need to know what is dharma. In earlier chapters we discussed that the Bhagavan himself is the Shaswata Dharma Gopta. We discussed this. So he is the dharma. By knowing the Bhagavan and his ways and his Swarupa and Lakshana, by knowing that we would know what is dharma. It need not be the ethical framework or the moral framework or the code of conduct that each country or each society or each organization, each family, each individual, it one way at one level it is a subjective matter. There are other heuristics which are thumb rules, which are also the universal ethics and then laws that govern. So that's why they call it Sasmat Chatram Pramanante. So that Shastra has to be taken as the standard and the benchmark. So is it for bodily pleasures or is it to achieve something else is the fundamental question. So the humans seem to be getting confused as to who am I? And the entire pursuit of life and the span of life is only to realize, and all Vedanta and then all Divya Jnana and then the knowledge, divine knowledge is also talking about Swaswarupānusandhana, Atma Jnana. These are the ones. People tend to look at it from a Bhakti Margi, so look at it in a Dvaita Bhava, that Paramatma is different and Jivatma is different. And with this bodily sadhana, and the body is an opportunity and instrument to do the effort and then sadhana to reach somebody who is a different entity than me, that is Bhagavan. That is one way of approaching. The other one is actually the human being human is actually, we are not human beings, but we are spiritual beings having a human experience in this life. Normally, we may think that we are human beings trying to achieve some spiritual enlightenment in life. Actually, we are Sunvantu Vishve Amrutasya Putraha. We are the eternal souls which are given the opportunity based on our karmas in this form of and then we are born in a particular yoni or a geography or a family with some samskaras and then the vasanas. So based on that, the sooner we realize with the help of this divine Sahi knowledge, right knowledge and then right Guru Upadesha, because here Guru ka, avashyakata bahut minor rakhta hai, and then that we all understood and we have. No one knows that who am I. But we keep giving us labels, starting with our own name, Shriram, इसके बाद श्रीराम दर्भा, इसके बाद गोत्र एंड देन ए फैमिली खानदान, इसके बाद मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं डॉक्टरेट हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं सीईओ हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, ये अचीव किया हूँ, वो अचीव किया हूँ, और ये भी
these are the self claims that we say, and then seek some kind of a adulation and then appreciation, and only to position ourselves and then seek some kind of a higher recognition, sometimes more than what we are and what we deserve, and we keep indulging in that kind of positions and possessions. These two things, I think we are getting stuck with the bodily pursuits. Then what is it? And is it the soul? It is the आत्मा जो बोलते हैं, जो परमात्मा जो होता है, वही आत्मा सही सभी में है. If that is there, then how am I seeing it differently, and why am I not seeing every day? That is because of Maya, the illusion, which is covering it and then which is making it blind about it, and which is which is making us fall for the pleasures and sensory pleasures. So in order to know that and then break that Maya illusion with the help of the right knowledge, and then looking at the right knowledge, we will be able to see clearly that the soul, the Paramatma, is nothing but it is the same which is in all Jivatmas. For that he has given a beautiful example. Like for example, even in the creation also, so kamayata bahusyam prajaye, that's what he said, and then afterwards he said tat susva tadevanu pravishetu. That's what Upanishad Taittiriya is saying that. So when he is created that, he entered into them. So that clearly mentions that he is there everywhere. So nachasthani, nachamatstani, that's what also he said erstwhile in another chapter. With these pramana vakyas and shruti vakyas and Upanishad vakyas, ye siddha hota hai. And the dilemma may compound, like for example, I am reminded of a old Hindi song, and that is the beautiful name of the movie is also Sangam. Sangam is also unison, mere sanam. उसमें क्या है, if you remember, एक जिस्म मगर दो जान है हम. So I would like to say that एक जान है दो जिस्म मगर, एक जान है दो जिस्म. तो एक्चुअली एक जान है दो जिस्म. ऐसे नहीं चलेगा. So this is what संगीत के महारथी हैं. ये संगीत के महारथी आपके साथ हैं. ऐसे नहीं चलेगा. गा के सुनाना पड़ेगा. ऐसे नहीं चलेगा. अच्छा, गा के सुनाना पड़ेगा. तो वो भी कहीं कभी और आप जानते हैं. So anyway, coming to the thing is that so same thing is echoing in Mundakopanishad, and then it is said in Shvetashvatara also, is that Vasuparna Sayuja Sakhaya Samanam Vruksham Parisasva Jate, Anastanyanya Avichakasiti. That's what it says, Tayoranya Pipalam Svagvarte Anastanyanya Avichakasiti. So it is also like two birds perched on the same tree. Vriksha is there. That is the field that which we are talking about. And then one is Jivatma and Paramatma, the other one is though part of it on the tree only. One is witnessing as a Sakshi, and the other one is actually enjoying the benefits. Similarly, there are the Eki Atma hai, though bodies may, it is appearing as if it is in the two bodies and then operating. Then if Paramatma agar sabhi mein hai to, one is poor and then one is rich, one is good, one is bad, one achieved something, one is not able to achieve something. ये difference क्यों है करके दुविधा में भी पड़ सकते हैं. उसका answer is very clear that it is the karma, the vasanas that we carry, the pious deeds, and then the other things which we do. That is the fundamental aspect of the Sanatana, and that is why it is important to do and perform the pious deeds, so that we cleanse the sins and also deposit for the future janmas and then the karmas. That is how it has to be understood, and that is the kshetrajna. Is that kshetrajna, that is the knowledge about this field. The other kshetrajna is know that who is behind all the fields. There may be a grid, but power has to come into the grid to be distributed. So where is this source of the power? Whether prana kaho, ya atma kaho, ya antaratma kaho, ya paramatma kaho. So the switch, जो main switch है उनके हाथ में होता है. That जब तक वो switch on नहीं होता है, grid या appliances शुरू काम नहीं कर सकते हैं. तो उसी यही जानने से या आसान हो जाता है. I think that's how it should be understood, and then more details can be understood and related to the practical day-to-day life also from this sublime chapter of 13 is what my take is. Thank you. Great. तो अब हम चलते हैं भाटे साहब के पास में. भाटे साहब, स्वागत है आपका. नमस्कार. और इसके बाद हमारे आज के जो एस्ट्रीम गेस्ट स्पीकर हैं उनको
देंगे। आप पहले अपना राउंड पूरा कर लीजिए। Ji, I will talk only for a few minutes. I will You let take your more time. That's time not a to, yeah. yeah. Yes, I was late. Sorry, I was late in joining here because we are just getting ready to go to a Hindu temple. I'm not home. I'm at the home of my son in Tallahassee, Florida. And we all, myself, my wife, my son, our daughter-in-law, and our two little grandkids. So all of us are getting ready to visit a Hindu temple in Temples are Tallahassee, always which is coming up. temples are always for Hindus. Well, the word temple is also applied to a synagogue of Jewish. No, So that's why they don't say temple. They say synagogue. yeah, they say synagogue, but oftentimes even the Jews use the word temple. So anyway, so Yeah, that again, Narkani I साहब. would like to, yeah. अल अक्सा मस्जिद जो है जिधर से पैगंबर साहब सदैह ऊपर गए ऐसे कहते हैं. आई हैड द ग्रेट गुड फॉर्चून टू विजिट दैट प्लेस एंड भाटे साहब आई एम टेकिंग जस्ट 1 minute and I didn't know how to do nawaz and all that. It is only because it is under Israeli control that I was able to get into it incidentally. Otherwise, they don't allow people in these houses of worship. So I sat, I did virasana and all that, and jate samay, involuntarily I did this, namaskar kiya. So old Arab standing next to me said something to me in slight anger. So I understood what he was trying to tell me. But then I pretended to be a Spanish and I said in Spanish that I don't understand. So he said, no praying allowed, So I laughed at him. I said, आपके अल्लाह के दरबार में, oh God, this. Okay. Connection is out. भाटे साहब कंप्लीट कर लीजिए. सेकंड राउंड में Yes, नारकनी साहब अपनी बात कंप्लीट. yes, there are 4 points that I would like to mention quickly. The first point is that I would like to mention that there are 400 temples. Now I'm specifically using the word Hindu temple. 400 temples all over United States. Out of these 400, there are 80 temples which are sufficiently big. We would identify them as big temples. The remaining temples are comparatively smaller temples. Now in Tallahassee is state capital of the state of Florida, and that is where we are currently. And a few years ago, they started building a temple in Tallahassee, and that is what we are going to visit. So I'll be only in the first round here, because in the at the time of the second round, we will be driving. So anyway, so I wanted to mention about the 400 temples in all over United States, and we are going to one of them. Secondly, the second point is that I would like to connect later on in the next episodes or the future episodes, how this chapter 13 of Bhagavad Gita connects to the Agama style or Tantra Vidya style worship. I would like to do that, and I'm just making a mention that this is the second point that I want to mention, because when it is a discussion of Kshetra and Kshetrajna, we can identify the Murti, the body of the divine body of God, as the Kshetra and the Prana that is included or that is infused within the Murti by doing the procedure of Prana Pratishtapana. That is can be identified as Kshetrajna. So I would like to present a case that the contents of this chapter 13 also apply to the agamic side of Murti Puja and the procedures involved there. And I would like to elaborate on what is Prana Pratishtapana, how is it done, and what is the philosophical meaning of that.
And there I would like to connect with Nadkarni ji also, who mentioned the Gestalt psychology. So there is a lot of Gestalt involved in this discussion of connection between the chapter 13 of Bhagavad Gita and the Murti Puja. And I know that Nadkarni ji is already working on a book of Panchayatana, and we can connect this entire discussion to that as well. But that will be my future project. So this was point number 2. Point number 3 is that when we talk of Gestalt, we can also bring in some of the other points of this chapter 13, because I'm not having Jnaneshwari in my hands just now, but in the next episode I will read out what Jnaneshwar says in his description of this chapter 13 of Bhagavad Gita. He clearly mentions that the entire body of this chapter 13 of Bhagavad Gita is based philosophically on Sankhya Darshana. That is Jnaneshwar's claim, and of course, I agree with it completely. So, there is no mention of Ishvara here. Sankhya Darshana essentially is a Nirishwaravadi Darshana. So Ishwar does not come into picture here. But according to Jnaneshwar, this chapter 13 of Bhagavad Gita is entirely based on Sankhya Darshana. The discussion about Prakriti and Purusha is same as Kshetra and Kshetrajna, etc., etc. So we will come to that in next episode. So, and I will read out what Jnaneshwar is saying in his great book Jnaneshwari. That was point number 3. Point number 4, I'm also an expert in the research. I have worked in comparative religion, and that has been a point of my research. And I do find a lot of commonality, at least in my research, between Hinduism and Judaism. Now, just yesterday, I came to know, I'm in America, so I do get the news a little late. But you people in India must have got the news earlier that About what? the Prime Minister, about that the Prime Minister Narendra Modi ji has endorsed and said that we stand with Israel in the war that is happening just now. Now, I would like to agree with that completely, because I do find philosophical commonalities between the Jewish religious philosophy and Hindu religious philosophy, and I'm writing a small book on that. Now, unfortunately, I write 18 books at the same time in parallel. So the work on the writing is going rather slow, because I do this, I do that, etc. So the time gets divided. But anyway, so that is another point number 4, that I will bring up in next episodes. And the last point that I would like to mention is that, in my opinion, at least, Hindus and Jews need to come together. And there is a statement made by Sarasangha Chalak Bhagwat ji recently, which also was brought to my attention a couple of days ago. And there he is mentioning that Hinduism actually always had, for millennia, it had Sarva Dharma Samabhava as a concept. And that is a claim of Bhagavad Ji. And again, I completely agree with him on this point. And I would like to someday point out to him the commonalities which I find in Hindu philosophy and the Jewish philosophy, and the gestalt between these two, along with the gestalt of all this philosophical discussion and Murtuja, etc., etc. So these are the 4 or 5 points that I wanted to mention. I'm sorry, we will be driving soon to go to the temple, and so I will not be present for the second round. बट आप So जाए इससे goodbye. पहले, Thank you. आप जा रहे हैं इससे जी पहले 2 बातें हम जरूर कहना चाहेंगे, जिनका भी आपने मेंशन किया, उनके लिए भी मैसेज दे देते हैं कि ये जो सर्वधर्म संभाव है,
ये जो वसुदेव जी कुटुंबकम है, ये आपके ही नारे हैं। कोई इसमें बिलीव नहीं कर रहा है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करने वालों के साथ ही विभाजन हुआ, देश के टुकड़े हुए, वो नहीं मानते। अभी नाडकर्णी साहब कह रहे थे वहां अलक्सा में हाथ जोड़ दिए, इसमें वो लोग शिर्क मान लिया उन्होंने। वो तो गनीमत रही कि स्पेनिश में बोल जी गए, नहीं तो शायद वहीं इनको अभी जो हो रहा है ना राइट वहाँ, राइट वैसा ही कुछ हो जाता। ये हाँ हमारे नारे हैं, जी वो जी नारों में बिलीव नहीं जी करते। हमारे नारे हैं बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल लगाते रहो। वेल वेल ऑफ कोर्स that shows बट the एक बात के लिए, superiority एट दिस of फेज ऑफ योर yes एज, आई वुड लाइक टू कमेंट, yeah दिस इज रियली इनक्रेडिबल दैट यू आर वर्किंग ऑन 18 बुक्स साइमल्टेनियसली। मैं तो 20 साल से एक yes बुक के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो मेरे से नहीं पूरी हो रही है। 20 years. no but I'm entirely in I agreement salute. but I'm entirely in agreement with your statement कि सर्वधर्म समभाव जो है ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदुओं की ही है, but that shows the superiority and the all pervading nature of Hindu philosophy. So it is a point of superiority. It is not a, we are not so narrow minded, we are extremely broad minded. But they are broad. They are broadly. No, they are narrow. No. Non-Hindus are extremely narrow. It is Hindus who are broad. No, but they are broad on this planet. Well, anyway, so Yeah. so But anyway, thank you very much. Eagerly waiting for our guest. I'm eagerly हाँ, waiting for इसीलिए एक our बार guest. हमारे जो Yes. esteemed guest हैं उनका. So now, not taking much time, we are presenting our esteemed guest speaker, and he is His Grace Swami Mitranand जी. स्वागत है आपका. नमस्कार. Namaskar, namaskar. My salutations to everybody. My audio is fine? It's Yes. fine, almost. Yeah. Right. Yes. Okay. My salutations to everybody. Thank you so much for having me here. Thank you so much for the enlightened discussion. There was a lot of very inspiring information to gather. I work mostly with the youth, Chinmaya Mission, and I work in the Northeast India. So my discussion in this forum would be how Gita can be brought to the Yuva. In what way we can present chapter 12, or now we are heading into chapter 13. How chapter 13 can be presented to the youth. So that is what I would be deliberating upon in the coming sessions. Now, chapter 12, which all of you have just completed, there is a very simple verse where Krishna says, I think fourth verse, Te prapnuvantimeva sarva bhuta hite rataha. Te prapnuvanti mameva sarva bhuta hite rataha. They attain me who takes delight in the well-being of others. Sarva bhuta hite rataha. Sanniyam indriya gramam. He who has mastered the senses. Sarvatra samabhutaya. Towards everybody, the person is balanced. Sarvatra samabhutaya. Te prapni. They attain me alone. Sarva bhuta hite rataha. It's a lovely, simple verse which we can guide the younger generations to commit something which is selfless and take delight in that simple action. That you are contributing to a bigger cause and be happy with that cause and take joy in it. If this is practiced, we teach them slowly, to work with a sense of karma yogi, performing something without being attached to the action or to the result, but simply enjoying the joy which comes out of it. So while we're discussing chapter 13, introduction to it, I was thinking this verse where he directly says, Te prapnuvaneva, they attain me.
he who takes delight in serving others, in others' well-being. This is a principal concept of Sanatan Dharma. We look at the whole world as Vasudeva Kutumbakam. We take care of the whole universe as one family. But please remember, when we say Vasudeva Kutumbakam, we have to understand very clearly what today happens to be Dr. Kalam's birthday. And Dr. Kalam said, strength respects strength. Now that line is very important. Strength respects strength. Our declaration of Vasudeva Kutumbakam comes from strength. It can't come from a weak nation saying Vasudeva Kutumbakam. We declare that Vasudeva Kutumbakam world from strength. When we operate from strength and then we look at the whole world, the creator and the created as divine, and serving the created becomes prayer. Now, this is a very unique thought of Hindu culture where the created is seen as divine. Not just the creator. The created, when we worship, you are worshipping the creator only because they are not different. It is the Abrahamic thoughts which feel the creator is separate and the created is separate. For us, the created is as divine as the creator, and therefore Vasudeva Kutumbakam becomes so easy. And that way, when we go around serving people, Sarva Bhuta Hite Rataha, Krishna promises, Te Prapnovanti Mameva, they will attain me alone. So my approach in these deliberations would be, how do we dilute the intense Gita to a youth of our community? Thank you, sir. Right. हाँ, तो वो तो हमारे हम बचपन से सुनते आए हैं कि वो जो वुल्फ है वो हिरण से कहता है कि मेरे को तेरे घर में रहने के लिए परमिट कर दे। हिरण कहता है कि भाई मैं ये तो मेरा घर है। तो वो वुल्फ कहता है कि अयम निज परो वेति गणनाम लघुचेत सा उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। तो ये तो भेड़िए की चाल है ना, वुल्फ की चाल है, इसमें हम क्यों फंस रहे हैं? ये भी तो बात है। सेकंड राउंड में प्रविष्ट हो रहे हैं, संक्षिप्त राउंड रहेगा, ब्रीफ राउंड है। पहले कुछ इंटरजेक्शन चाहते हैं आप कर लीजिए। No, I need to go back to my daily regimen. Oh, sorry. I need to go back to my daily regimen, so I'll just finish one word. Okay, just to synthesize. Yeah, synthesize. People may get confusion and then a doubt that when there is a Paramatma, there is a Jivatma, and then how can he be in many, the Ek soul, how can it be in many bodies when I am seeing it differently? So for that the answer is given in the verse 33. In the same chapter 33 verse it is given that Yadha prakase tekah krushnam lokamimam ravihi. Just the way one sun is illuminating the entire world, similarly एक परमात्मा सभी जीवात्माओं में, सभी bodies में अंतर बैठ के, ये illuminating all the bodies. But the only thing is because of our ajnana andhakar, so we are not realizing, and then we are thinking because of the power of the Maya, we are thinking because of the illusion that it is appearing as different and diverse. So that is the answer given in 33. I am looking forward to the entire chapter from next week onwards, and nice to have eminent learned sannyasis and sannyasis which are drawn from the modern perspective also. I am glad to know that, sir, I am also doing the same effort of taking it to the mundane common people and then the youth. Thank you very much. I was very close to Chinmayananda in my youth. Actually, I used to be very close to him. Thank you very much. Right. Namaskar. So are you leaving? Yes, sir, I am. Because I have Navratri puja in the evenings. We all have, thank you. but we all have constraints. No, I have a different regimen. You are very strict. No. It's I really know, orthodox. Yeah. Orthodox. Yeah, right. Thank you. Swamini जी के पास चलते हैं. Second round में प्रविष्ट हो रहे हैं.
नमस्ते टू ऑल, नाइस टू लिसन टू यू। आपके सबको सुन के बहुत आनंद हुआ। लेकिन 13वां अध्याय जो है उसमें हम देख सकते हैं कि पुरुष और प्रकृति की बात है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात है और ज्ञेय ब्रह्म की भी बात है। स्वामी मित्रानंद जी हियर अभी है, तो मैं बता दूं कि 1980 में चिन्मयानंद जी को पहली बार मैंने सुना था। तब गुरुदेव ने ये 13वां अध्याय समझाया था, एंड दैट इज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। जब ये सुना मैंने कि ये क्षेत्रज्ञ है, ये क्षेत्र है, ये ब्रह्म है, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा था कि मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ, साइंस में ये है, ब्लैक होल ये है, और ये क्या है, ये क्षेत्रज्ञ क्या है। तो स्वामी जी जब समझाते थे तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठे, और भगवान की कृपा और स्वामी जी की कृपा थी, गुरुदेव की कृपा थी कि वहाँ अनाउंसमेंट हो गया कि हर गुरुवार को क्लास रहेगा, आप अटेंड कर सकते हो, आप एनरोल कर दीजिए। So that is how I started my spiritual life with the 13th chapter. It is very much close to me because I started my spiritual life with the 13th chapter. But ये अध्याय की एक विशेषता यह है कि यहाँ भगवान ने बहुत सारे विरोधाभास रखे हैं, और वो विरोधाभास से ही हमें ये तत्व ज्ञान हो सकता है। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर समझाया था कि कैसे ये विरोधाभास है जो हमें तत्व ज्ञान की ओर ले जा सकता है। तो बहुत सूक्ष्म है, यहाँ सब आएगी चर्चा बाद में, इसलिए मैं श्लोक का कोटेशन नहीं कर रही हूँ। लेकिन तो ये ज्ञान का क्षेत्र है, तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त करना है और तत्व ज्ञान के क्षेत्र क्या है, और उनके लिए जिस प्रकार से 7वें अध्याय में भगवान ने ईश्वर तत्व की बात की है, ईश्वर की जो 2 प्रकृति है, और यहाँ पर भी जब हम देखेंगे कि 20 जो मूल्य, अमानित्वम अदम्भित्वम करके जो भगवान ने 20 मूल्य दर्शाए हैं, जिसके द्वारा ही हम ये तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसमें एक मुख्य ये है मयि तु अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। तो वहां तो ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति के द्वारा ही आप ये कर सकते हो। दूसरा आचार्योपासना, मानी कि गुरु के पास हमें बैठना पड़ेगा, गुरु के पास हमें शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये बहुत सुंदर है, विशाल क्षेत्र, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक है, एक टॉपिक नहीं है, एक ईश्वर मात्र नहीं है, प्रकृति भी नहीं है उनके। अगर हम देखेंगे आगे तो इतने सारे टॉपिक यहाँ पर, क्षेत्र भी एक टॉपिक है, क्षेत्रज्ञ भी टॉपिक है, ईश्वर भी टॉपिक है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि निरीश्वर है यहाँ पर, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति है, मेरी भक्ति के द्वारा ही एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम। भगवान स्वयं कहेंगे कि यही तो ज्ञान है, यही तो ये सद्गुण है जिसके द्वारा हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जिस तत्व ज्ञान के कारण ही हम भगवान के अत्यंत प्रिय बन सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर भक्ति भी है, कर्म भी है, यहाँ पर जो स्वामी जी ने सर्वभूत हिते रतः जो दर्शाया है वो भी है। अमानित्वम अदम्भित्वम में हम देखेंगे कि बहुत सारे मूल्य भगवान ने दर्शाए हैं कि जो हमें ये जगत जो है, ये जगत से हम कैसे जुड़े रहें, ये जगत से कैसे हम अपना कल्याण करें, दूसरे का कल्याण करें। तो ये अध्याय की विशेषता है। जैसे जैसे एक एक श्लोक आता जाएगा हम विशेषता देखते जाएंगे, लेकिन मुख्य विषय जो यहाँ पर है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ऐक्य जो है, जीव और ईश्वर का जो ऐक्य भगवान ने यहाँ दर्शाया है, और उनके लिए क्या मूल्य हमारे जीवन में होने चाहिए, क्या सद्गुण हमारे जीवन में होने चाहिए, ये सब भगवान ने यहाँ दर्शाया है। पर पुरुष और प्रकृति भी भगवान ने दर्शाई है, और बहुत सुंदर अध्याय है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उसका आनंद लेते रहेंगे। हरिओम। बिल्कुल ठीक बात है। नाडकर्णी साहब, योर टर्न। हाँ जी, नमस्कार। Two brief points. One is the absolute magical influence I also was fortunate to have from Swami Chinmayananda ji, who was a friend of my uncle, who was a great devotee of Bhagavad Gita, and he came to our house in Pune, and I had the great good fortune of getting a set of his commentaries from his own hands to me when I had just graduated out and I was trying to make my way in this world full of rejection letters and call letters not being answered and all that. And what do you do? How do you handle disappointment? How do you
go forward, what do you do? So he gave a beautiful pravachan in which two or three of my most favorite verses got engraved in my brain, as it were, and they were most helpful to me in handling some of the, shall I say, opportunities rather than problems that life in India can pose. That is one personal remembrance of gratitude to Sadhguru. Now, the second point that I wanted to talk about was, we often think that we have to be pacifist necessarily if we have to be Vasudeva Kutumbakam and all that. Whereas what we are discussing actually is a call to arms. Stand up and fight is the message being given to you. This is not the message to say that put up with adharma at all, or put up with besti, or put up with invasion, or asuric or danavik behavior. Let us be very clear that it is not a duty to turn the other cheek automatically or reflexively. The Bhagavad Gita we are talking is exactly exhorting the hero to remember his Chhatra Dharma. This is what people, taught us when we were growing up in that pacifism has its limits, but you have to also balance it with your duty in this world. Now, does it mean that you tolerate somebody being butchered in front of you? Absolutely no. That was the answer, and that made me also take up to, may I confess, martial training in my youth of how to protect people if there is nobody else you can point a finger to, or unke paas jao. How do you protect at the cost of your own life? And I'm very sorry to say that I am a deadly human being in unarmed combat. But does that make me a violent or a antisocial, antipathic human being? Not at all. I would say that one of the great insights of Indic culture is the understanding of ahimsa, but it has to be taken always in the context of life and its duties. Now, having said that, sometimes I feel, in the American context and other contexts, we tend to think that Indic culture is pacifist or it is bovine, or it's my experience working in America that it is possible to be completely rooted with your values and to strive completely with full throttle competitiveness, but without getting burnout. Now, that is the secret. The performance anxiety is being handled by the Lord. Says, how do I fight against Bhishma Pitamaha? He says, do your duty, nishkam bhav se karo. Surrender these things to me. And in any case, for your kind information, he has already been defeated. You are just a medium or a madhyam. This is also an illusion of what Darbha sir talked about of Maya. Pehle hi ho chuka hai ye sab. Now, that may be a rationalization, but essentially, Bhagavad Gita, I would submit, is a call awakening to arms. Thank you. And talking of arms, here is the goddess of multifold arms, whose festival begins, and this is a beautiful Durga, specially made for me by a Shilpa Guru artist in Vidarbha. So, with salutations to the great mother whose festival begins, I would like to wait for other comments. Thank you. हमारे दर्शकों को भी और आप सबको भी आज से शुरू होने वाले ये जो नवरात्र हैं इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना और ये कामना कि ये जो नवरात्र है ये नई शक्ति का और नई ईश्वरीय संपदा का संचार आप में, हम में, सब में करें। जहाँ तक बात आपने कही ग्राउंडेड की, और बोवाइन जो भी कल्चर अपनी अपनी है वो उनकी कल्चर है, लेकिन उनकी कल्चर में उनके जो लोग हैं उनको लेकर वो बहुत ग्राउंडेड है। चाहे वो यूएस के लोग हों, ओरिजिनल उनकी बात कर रहे हैं हम जो यहाँ से गए,
यूरोप से, और आप यूके चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, वो अपने सिटीजन्स की बहुत, आप देखिए जरा इजराइल को देखिए, एक हॉस्टेज को छुड़ाने के लिए 1000 लोगों को छोड़ना पड़ा, फलस्तीन को छोड़ दिया गया। अभी भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो लिंगर ऑन हो रहा है, अदरवाइज वो चाहें तो विद इन 24 आवर्स वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। अपने लोगों को छुड़ा कर मानेंगे, इसके बाद कुछ करेंगे। अपने लोगों के प्रति जो सम्मान है वो हमारे यहाँ नहीं है, तो हम चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें कि हम ग्राउंडेड हैं, नहीं है। मैं एक किस्सा कह भी चुका हूँ कि मेरे एक दोस्त इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, वहाँ उनका झगड़ा हुआ एक इंग्लैंड के ही व्यक्ति से, गोरे से मतलब, और इंडिया का पुलिस ऑफिशियल था, उसने हमारे ही इस इंडियन को डांटा, इसी की मार लगाई। उस दिन इस इंडियन को नफरत हो गई और वापस अपने कंट्री में इंडिया आ गया कि भाई मेरे साथ यहाँ तो न्याय नहीं होगा। तो इंडिया, चाहे इंडिया के लोग यहाँ हों चाहे बाहर हों, अपने लोगों को नहीं रिकॉग्नाइज करते, तो वो ग्राउंडेड हैं। और ये जो भारतीय इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की महारानी के साथ उनका भोजन था, डिनर दिया था उन्होंने, लेकिन डिनर से पहले वहाँ से रॉयल चर्च ऑफ इंग्लैंड से आए वो बिशप वगैरह, उन्होंने उस भोजन को पहले पवित्र किया और उसके बाद भोजन शुरू हुआ। तो वो तो कनेक्टेड हैं, हम नहीं हैं। और कहने के लिए ठीक है, हम कहते हैं कि हम ग्राउंडेड हैं, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन वी आर लैकिंग। और दुनिया चाहे ठीक है बात करती होगी, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड्स में और इस पर चर्चा भी करेंगे। तो चूंकि अब गेस्ट स्पीकर भी हमारे साथ हैं, एंड इफ ही वांट्स टू से समथिंग, या प्लीज, मोस्ट वेलकम। When Krishna tells Arjuna, take action, shoot Duryodhana, which is, like Arjuna wanted to run away. Krishna made sure that you stay here and fight. But you must take action, you must shoot Duryodhana. But in your heart, there cannot be hatred. Take action without hatred. Then we become spiritual. Sir, like when you say Advaita Sarva Bhutanam, to Arjuna, Krishna is telling that to Arjuna. At the same time, Krishna is telling Arjuna, take action. Go shoot Duryodhana. But in shooting Duryodhana, in you there should not be hatred. Because that is an action which needs to be done. It has to be done. Do it without hatred. Then we evolve to the next level of our spiritual growth. This is what I was trying to tell you. I said Vasudeva Kutumbakam also. I referred it from so and that's why I said strength respects strength. Unless we are strong, this philosophy will not work with others. We have to be strong to take people along without we losing ourselves. Yeah. हाँ, तो वो कहते हैं ना, क्षमा सोहोती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंत नख विहीन सरल हो। हम तो उस तरह के बने हुए हैं ना, तो हमारे तो नहीं सर जी, नहीं बलम उपास में एंड ऑल्सो जो स्वामी जी कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं कि बल विदाउट रिस्ट्रेंट इज ऑल्सो डेंजरस, यानी दैट। एंड देखिए सर जी, ये दुर्योधन जब भी भीम युद्ध कर रहा है, टू ब्रेक हिज थाइज वाज शोन बाय कृष्णा, बिकॉज आपने वो लिया था, पंड लिया था, वो करो, break his thighs, because see, it is not a call to slaughter. You see, it is actually a dharma yuddha also. Many people try to say that he broke rules of combat. No, when he brought Draupadi or Vivastra karne ka prayas kiya, so that is where the destruction of his Urubanga was set. And when Karna starts bleating, what did I do? Then he is reminded, what did you do with Abhimanyu? What did you do with poisoning of Duryodhana's mind? You could have restrained him. And it is because of the Vishavalli of Karna that Duryodhana became this Mahabhujanga, actually.
And it is also, we have this tendency to worship the wrong sort of anti-heroes, which is also dangerous. Making Arjuna as a Kair or he was anything but. If you look at his upadhis, the 12 epithets of Arjuna, he is absolutely divine. And the difference between these other heroes and Arjuna is seen in Bharavi's Kirata Arjuneya. वो तो उसको पल्प बना देते हैं, लेकिन he refuses to give up. And every flower that he plucks with his mouth and puts on the lingam goes to the head of the Kirata. And then he realizes, who he is fighting. So I think these kinds of discussions are necessary to remove these cobwebs of, romanticism or delusion sometimes and get the right message across. ठीक बात है. वीरता में और क्रूरता में बहुत फर्क है, और ब्रेवरी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है. ब्रेवरी आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है. दुनिया की जितनी भी अच्छी आर्मी हैं वो कभी भी क्रूरटी नहीं करती हैं, क्रूरता नहीं करती हैं, वो क्षमा भी करती हैं. और जितना वीर होगा व्यक्ति वो उतना क्षमाशील होगा, जो आपसे झगड़ा नहीं करता है. मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको. बस स्टॉप की बात है. एक आदमी एक दूसरे से झगड़ा कर रहा था, तो वो झगड़ता करते करते गाली गलौज पे आ गया और उसने फाइट करने के लिए हाथ भी मार दिया. तो दूसरा आदमी था, उसने कहा कि तूने अब तक जो किया वो तो ठीक है, अब आगे मत बढ़ना क्योंकि मैं पहलवान हूं. तो और तुझे पता नहीं है कि तेरे साथ क्या होने वाला है. तो पहलवान ने उसको चेता दिया कि भाई तू बचेगा नहीं फिर. तो वीरता जो है वो व्यक्ति को बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाती है. लेकिन अब आपकी लड़ाई जब क्रूरता से हो तो फिर पृथ्वीराज का क्षमा कर देना इतिहास की एक सबसे बड़ी भूल होती है, ब्लंडर होता है, जिसकी सजा सदियों ने भोगी. बिल्कुल. जो लम्हों की खता होती है वो सदियों को भोगनी पड़ती है. हाँ, महाभारत में अश्वत्थामा का भी एग्जाम्पल देखिए आप सर, और अर्जुन का देखिए. Ashwatthama was not able to handle the astra that same guru gave to these two. नारायण अस्त्र जो है उसके ऊपर अर्जुन जी का कंट्रोल था, because he was in a state of meditation almost. Whereas look at what Ashwatthama has done. For सदियों के लिए उसका वो प्रायश्चित भोग रहे हैं अभी. हाँ, सही बात है. नहीं तो वही बात हम कह रहे थे, जो स्वामी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह आदर्श के रूप में, एक आइडियल सिचुएशन के रूप में ठीक है. लेकिन जब सब तरफ परिस्थितियां आइडल हो तो फिर आइडलिज्म लागू हो. अभी जो हॉस्टाइल सिचुएशंस हम देख रहे हैं हमारे देश के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा. आप देखिए जो कोरिया से लगाकर हमारी रिश्तेदारियां यहाँ हुई हैं, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, यहाँ के लोग पढ़ने आया करते थे. पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तो बात ही क्या करें, ये तो हमारे ही हैं. तो आप देखिए इसको किस तरह से क्रूरता से तोड़ा गया है. आज हम एक दूसरे के दुश्मन हैं. श्रीलंका का तो उदाहरण हमारे मेवाड़ महाराजा का ही, अभी मेवाड़ महाराणा का ही है, अभी हाल ही का, कोई ज्यादा पुराना नहीं है, वैवाहिक संबंध थे. तो ये जो सिचुएशन थी इस पर किस तरह से हमने चीजों को गंवाया है, और हमारा मतलब दृष्टिकोण उस तरह का हो गया कि ठीक है सहन कर लो, और बाद में नारे दे दिए गए कि अहिंसा परमो धर्म कर लो. तो ये जो सिचुएशंस हैं इससे थोड़ी सी बात उठ रही है, सभी जनमानस में उठ रही है. और सनातन परंपरा को आप देखिए जरा, बहुत अच्छी परंपरा है, वैज्ञानिक है, सब मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद संख्या बल किसका है? यदि प्लेनेट के क्षेत्रफल को देखें तो सबसे ज्यादा किसके पास है? रिसोर्सेज किसके पास है? ये होती है ना बात. तो यहाँ हमारे नेताओं की हत्याओं का आज तक हम हिसाब नहीं कर पाए, रिपोर्ट तक नहीं ले पाए. कई तो ऐसी हैं जो शर्मनाक स्थितियां हैं हमारे सामने. तो ये सिचुएशंस भी हैं. हमले हो गए, उनके बारे में हमने रिटेलिएशन नहीं दिखाया, हम बड़े भाई ये बनते घूमे. तो ये रेलेवेंस है. अदरवाइज जो शास्त्र परंपरा है, जो हमारा स्क्रिप्चर है, वो तो उत्तुंग है ही है, उसमें तो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें हम कोई बात मतलब इस तरह की कह ही नहीं सकते. जी स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर कंक्लूड भी करें. जी Sir ji, Sharma ji, I must mention that 19 members of my family were slaughtered in Sindh. 19 members of my family
have been slaughtered in Sindh in the partition riots. So I have experienced this personally. तो ऐसे नहीं कि हमें इसका दुख दर्द का पता नहीं है. That is why we have been resorting to the cultivation of strength, Sadji. Let's comment. Incredible. तो आपने सुना, ये हैं हमारे साथ हर ग्रेस स्वामिनी सद्विद्यानंद जी सरस्वती, श्रीमान विठल जी नाडकर्णी, और गेस्ट स्पीकर के तौर पर हमारे साथ हैं हिज ग्रेस स्वामी मित्रानंद जी. और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ अब तक थे प्रोफेसर श्रीमान श्रीराम जी दर्भा, प्रोफेसर श्रीमान अनिल जी भाटे. आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार. तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में. आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस. थैंक यू सो मच. नमस्कार.